Hello and welcome from sunny Davos. I am Siddharth Zarabi and with me Hardeep Singh Puri, the Minister for Petroleum and Natural Gas. Mr. Puri, welcome to Business Today and the India Today studio here. It's perhaps a coincidence that we didn't know that we would be chatting to you just 24 hours after a significant cut in additional excise duty by the government and the consequent reduction in oil prices, petroleum and diesel. Your first thoughts as to the reason it happened now and what it really means from a price perspective? First of all, it's not a standalone decision. मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं कि नवंबर 4 तारीख को the first petrol and diesel excise cut took place. You remember 5 rupees and 10 rupees petrol and diesel excise was cut. It was a decision taken by the government, by the Prime Minister in particular, who has been personally monitoring the very difficult terrain through which we are having to navigate. COVID was difficult enough. COVID was difficult enough. We are not still out of it, no matter which way you look at it. I mean, the 80 million people, 800 million people, 80 crore of our citizens who are fed, given 3 meals a day, that process, that scheme is still on. And that 2 billion vaccine doses distributed to our citizens. This is reflective of the Prime Minister's personal concern for the welfare of the common man, Aam Aadmi. You know, interestingly, normally when prices are very high, you would expect that the elasticity or the lack of elasticity, you would expect that demand would drop. But this month's figures which I saw, petrol consumption is 14% higher than the corresponding period the previous month. Diesel also, the earlier month. Diesel, I think also 2% or so. But that overall increase in consumption cannot conceal the fact. It conceals and it should not be allowed to conceal. I would say that the decision has been widely welcomed. It has been applauded. We got some carping noises, but you know, some of us who are at the wrong side of the political spectrum, and we are fast atrophying or disappearing in terms of our political relevance. They will carp, it doesn't matter. The Prime Minister had some time ago made a pointed reference to the responsibility of states when it comes to oil sector duties. As we all know, it's not part of GST. Obviously, the BJP-ruled states have responded. Many haven't. And now, as I know at least, I think a few states have started to respond after yesterday's cut. What lies behind this state-center gap in this? You know, if we were having an academic argument about different stakeholders in a system of cooperative federalism, it's a centre's right to raise revenue, it's a state's right to raise revenue. That would not be a focused discussion. The fact of the matter is that a citizen of India, whether he or she lives in a BJP-ruled state or in a non-BJP government, whereas a non-BJP government, that citizen has the same rights. And there are people from all segments of society. So how can you allow a situation where a BJP-ruled state, petrol is 15 rupees cheaper than in a non-BJP state? I told my friend, the Honorable Chief Minister of Delhi, and I use my words very carefully, I said, आप कम नहीं करना चाह रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूँ, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी. वही हुआ, उन्होंने नहीं कम किया पहली रिडक्शन के बाद, तो उनको लगा कि 20%, after a few days, 20% there was a shortage. Now, you can't go all the way from a place X to Y to fill up long distance. But if you are in a place like Delhi and you're traveling to Faridabad or Gurgaon, etc., so instead of filling here, you fill there. वो तो border पता भी नहीं लग गया. Border पता भी नहीं. तो जब 20% डीलर्स को फर्क पड़ा और ये हुआ, तो उन्होंने भी कम कर दिया. मंत्री जी, केजरीवाल जी ने क्यों नहीं घटाए फिर? उस समय क्यों नहीं घटाए? जी, उनको लगता था कि इसको अगर रहो तो रेवेन्यू बहुत बढ़ती है. और उनका मैं अब क्या बताऊं, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो विज्ञापन पे, एडवर्टाइजमेंट पे तकड़ा खर्चा है उनका. सो आई डोंट नो, आई एम सेइंग दिस नॉट सीरियसली, बट I think even he realized he had to reduce finally. आपको क्या लगता है कि अब जो ये हुआ है, सारे स्टेट
गवर्नमेंट्स को क्या कॉरेस्पॉन्डिंग कट्स करने चाहिए? मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वी जस्ट वेरी ऑन। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इसके बारे चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग की वर्चुअल मुख्यमंत्रियों के साथ जी, वहां पे तो उन्होंने बहुत फोर्सफुली कहा जी। कुछ लोग हमारे जो ऑपोजिशन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर उनके नाराज भी हुए काफी कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। हकीकत यह है कि दे डिडंट डू इट। नाउ फॉर इंस्टेंस you have a situation where, see, if you say that I have a right to raise revenue, but you reduce the revenue, you reduce the duties on imported alcohol. I'm not taking any names, from 300 to 150%. Another one brought it from 300 down to 120%. Now, I think after a while, you have to answer this in the court of the people. पुरी साहब, राज्यों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें जीएसटी का कॉम्पेंसेशन पूरा नहीं मिला, जीएसटी में आगे बढ़ना चाहिए, कॉम्पेंसेशन फॉर्मूला बदलनी चाहिए, और अब एक कानूनी फैसला भी आ गया है कि राज्यों के अधिकार जीएसटी को लेके। नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात तो किसी ने कहा, एक स्टेट गवर्नमेंट है, मैं उस पे यहाँ पे क्योंकि ये मामला न्यायालय पर तक पे पहुंच गया, मैं आपको ज्यादा डिटेल में कहा जाए, इसको जीएसटी में लाइए। आपको याद होगा जब जीएसटी काउंसिल के एक सेशन हो रही थी लखनऊ में, तो एक केरला हाईकोर्ट का शायद था, निर्णय भी था कि आप इसको काउंसिल में सामने रखिए। तो जब काउंसिल में सामने रखा तो किसने उसकी किसका विरोध किया? ऑपोजिशन स्टेट। देखिए, ये चर्चा चलती रहेगी। In a system of cooperative federalism, democracy, this charcha to a certain point is healthy. But the proof of the pudding is in the eating. अब मैंने आपको इसमें नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, आप कहते हैं अगर सेंटर ने एक्साइज किया, आप ये कैलकुलेट कर लिए आपने कितने स्टेट टैक्सेस उसमें कलेक्ट किए जी, उसमें से देख लीजिए। या तो आप ये पोजीशन ले लीजिए, हम समझते हैं कि ये इसका जो लाभ है हम अपने नागरिकों, हमारे जो स्टेट में रहते हैं, उन तक नहीं पहुंचाना चाहते, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तेल बढ़ता है, एक्साइज बढ़ती है, कभी घटती है। ये जो तेल का खेल है मंत्री जी, प्राइसिंग को लेके, और मैंने इसमें एक पत्रकार के नाते बहुत साल काम किया है। दो मुद्दे सर, ये फॉरेन पैरिटी पे प्राइसिंग होती है, और उसको लेके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको भी मुनाफा कमाना है, बट हैं तो सरकार की कंपनी, देश के नागरिक की कंपनी। देखिए, तेल के खेल में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या फंडामेंटल? देखिए, आप ऐसा है, दो एक्सट्रीम्स है, एक तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग का सिस्टम और दूसरा है डीरेगुलेटेड सिस्टम जी। आपको याद, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, क्षमा करिएगा। डीरेगुलेटेड भी है, पर 5 महीने के लिए आपने रोका। नहीं, उस टाइम चुनाव थे मंत्री जी। नहीं, गलत बात है ये। आप मेरे को बड़ी खुशी से इंटरप्ट करिए, पर मैं बेसिक फैक्ट्स रख दूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे याद है कि शायद 2010 में पेट्रोल के प्राइस जो है डीरेगुलेट हो गए थे, और 2014 में डीजल के जी, वो हमारी सरकार के बिल्कुल 2-3 महीने बाद। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल का दाम किस पे डिपेंड करता है? इंटरनेशनल प्राइस जी, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट जी, exchange rate, which can be significant. बिल्कुल, it depends on refining margin, etc. आप किसी OMC को कह रहे हैं ये सरकार की कंपनी है, उससे I take issue. देखिए, they are responsible corporate citizens. जी, अभी आप एक हुआ है कि हमारी 2 कंपनीज हैं जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की हैं, they have adopted a different path. अब मैं नाम नहीं लूंगा जी। अच्छा, हमारी कंपनीज ये नहीं है स्थिति के सुबह उठते हैं और उनका कोई सीएमडी मुझे फोन करता है, मंत्री जी बताइए क्या हुआ। देखिए, अगर आप कह रहे कि चुनाव के दौरान उन्होंने नहीं बढ़ाया, अरे चुनाव तो हमारे देश में, मैं आपको क्या बताऊं, 5 साल में हर साल होते हैं, और होते हैं तो एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। पहले रुके 5 महीने, फिर बढ़े, फिर 40-45 दिन रुके। Some of them are, sorry to interrupt. So what would you say, sir, should be our policy towards this? मैंने आपके फ्यूचर के सवाल पूछा। It's a private, these are private entities. I am in no position to tell them that you have to stop this thing. You know, they are watching the situation. Now, after all, it's in their interest also that the markets remain stable, because ultimately for a while they may not be able to pass on do the full recovery because they're making money on refining margins or petrochemical. But some of these are Fortune 500 companies and they're highly respectable. So they are in a situation where they will watch the situation, and as responsible citizens, there may come a time where they may suddenly start. I don't know. But today we are in the situation where
The government is assuming its responsibility for excise cut. I'm hoping the state governments will reduce their ad valorem VAT, and all the other players will play so that there is energy security, availability of energy and affordability. My final question, as a former member and a stellar one at that of the Indian Foreign Service representing India, along with other cabinet colleagues at the world's largest gathering of the business elite and the political elite, what's the message that you are hearing from people about India having navigated the pandemic, having done pretty decently well to manage it's not the message what I'm hearing here. Today, thanks to media organizations like yourselves, thanks to the fact that we are integrated, that news travels through different channels and mediums with breakneck speed, India is a good story. India is a good story for 3-4 major reasons. That it was able to face the challenges of a very basic existential nature during the pandemic. Our healthcare sector was in neglect. 2000 हमारी सरकार बनने से पहले जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर उसको हमने बंद करवा दिया तो कोई जरूरत नहीं. We were not only able to manufacture a domestic vaccine. One of our companies which is using research done at Oxford University and patented by AstraZeneca, they've done well. A pure Indian company has done exceptionally well, and today your vaccine has efficacy. I don't want to point you in the direction of countries which became vaccine producers and the talk is कि 38% उनकी vaccine efficacy है या वहाँ पे उसके consequences हुए. मेरा वो काम है. दुनिया भर से there is undiluted appreciation, a little bit of envy also I would say, that India was able to manage not only its healthcare system but on so many other respects. हमारे foreign direct investment देखिए जो अभी latest figures आए हैं, $84 billion. What was the foreign direct investment coming in 2004? $4 billion. 20 गुना. तेल is not a person जिसके पे छाप लगा होता है. पता है कहीं तेल निकलता है कहीं से. Place X, right? There are different kinds of, some have high sulfur content, some don't. There people buy, a ship goes from here to there. But how can I tell you, पिछले साल हमने जो financial year है, हमारा total imports were 0.2% of our total imports. उसका कारण है, उसकी geographical कारण है, कि आपको अगर आपके देश के neighborhood में तेल मिलेगा तो वहां से खरीदोगे. पर अगर आपको खरीदना पड़ेगा तो लोग खरीदेंगे. देखिए इसमें कोई hesitation नहीं है. So what I am saying is biofuels, exploration and production, E&P, we are raising it from कितने हमारे sedimentary basin है 26 है 7-8 थे हम पूरे सब में ले जा रहे हैं. If I have my way, there will be a well in every backyard, including yours and mine. You didn't speak about the IFS issue because we've had a... IFS में... It's being called arrogant. Your cabinet colleague has answered that question. No, जयशंकर जी ने जवाब दे दिया. मैं एक ही चीज कहना चाहूँ, ये IAS का UPS के इम्तिहान होता है, इसे इम्तिहान देना पड़ता है. फिर पास होते हैं, फिर अंदर आते हैं. So thank you. Thank you, Mr. Puri, as always. That was Union Minister Hardeep Singh Puri from Davos answering questions that are important for you and me. If you've been, thank you very much for watching.